Hello students, welcome to all scholar classes. So today I will be taking the next chapter, that is the chapter 4, structure of the atom. Okay? So here we will be discussing about charged particles in matter. What are the charged particles in matter? In chapter 3 we have already learned about atoms and molecules. Okay? And we have learned that atom is the fundamental unit of, or you can say fundamental block of a matter. Fundamental block of building block of a matter was named as atom. We have studied Dalton's theory, how did his postulates, what he told about atom. So what happened, this was known कि हाँ चलो atom जो है कि fundamental block है. I have also given you the example, like if we make a building, the brick is the fundamental part. Brick से wall बनेगी, wall से rooms बनेंगे, and room से एक particular flat बनता है. Okay? But the existence of different kinds of matter is due to different atoms. ठीक है, atoms के बारे में पता चला, लेकिन different kinds of जो matter है वो क्यों different kinds of matters है? Because there are different kinds of atoms. Okay? So now the question is कि what makes the atom of an element different from the other? एक element है ये, element 1 and this is element 2. Okay? So what is that thing which is making the atom of element 1 different from the atom of element 2? Like in the class we all are students. आप सब students हो, लेकिन सारे students तो alike नहीं होंगे. Although सब एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, but एक student दूसरे student से differ करता है. कुछ basis होगा, कुछ characteristics होंगे, होगा ना कुछ. वैसे ही एक एलिमेंट के एटम से दूसरे एलिमेंट का एटम डिफर करता है. तो वो व्हाट मेक्स दिस, ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं सारे एलिमेंट्स के एटम एक जैसे हैं? क्यों सारे एलिमेंट्स के एटम अलग अलग हैं? तो व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट? दिस क्वेश्चन वाज नॉट आंसर्ड देयर before in the chapter 3rd. And the second thing was that कि are these atoms indivisible? Really they are indivisible, as Dalton told us that atom is the smallest particle and we can't break it further. So if it is the smallest constituent, so what is it? Basically it is indivisible or not. So we shall be finding out the answers of these questions in our this chapter. Okay? So here we will be learning about the subatomic particles of an atom. So there we will be seeing electron and protons. They will be the subatomic particles. Again we will see the structure of atom. Okay? So various models have been proposed to explain how particles are arranged within atoms. Particles का arrangement atoms के अंदर कैसा है? Various models दिए गए. एक तो J.J. Thompson model आया, then Rutherford came, and in the last Bohr came, and so many things they have explained. So we shall be seeing the J.J. model of an atom, and we will also see that what were the postulates that Thomas gave and why his model failed. Then came Rutherford. What did Rutherford observe and what were the drawbacks of his model? Okay. Then Bohr model we will be seeing, and Bohr told about the energy level of an atom. Atoms में बहुत सारे energy levels होते हैं, उसके बारे में बोर ने एक्सप्लेन किया था. तो उस एनर्जी लेवल जो बोर ने एक्सप्लेन किया था, we are going to study that also.
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये दो चैलेंज आ गए साइंटिस्ट के सामने। नाउ दे हैव टू टेल इट बाय द एंड ऑफ द 19th century. Okay, so what did these scientists? They made a series of experiments. Scientists did a series of experiments. Okay, and one of the first indication that atom is indivisible की बात हुई थी कि एटम इंडिविजिबल है। आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सो एटम की इंडिविजिबिलिटी सबसे पहले कहाँ पे इसका इंडिकेशन मिला? फ्रॉम द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड द कंडीशंस अंडर व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्या माना गया कि सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और वहां पे ये कॉन्सेप्ट जो था कि एटम इज इंडिविजिबल ये पता चला। ओके, सो यू कैन टेक सम एग्जांपल्स लाइक if you rub two objects, okay, what you know, daily life maybe you have so many examples. It is said that when you rub two objects, they produce, means they get electrically charged. Okay, you must have seen in your daily life also when you comb your hair, and that comb when you bring it near a piece of paper, what happens कि that comb is going to plug that paper. उस पेपर को comb attract करता है अपनी तरफ। ओके, ऐसा क्यों होता है? कोई तो चार्जिंग होगी, कोई बाउंडेशन होगा, कुछ तो होगा कि वो जो comb है वो अट्रैक्ट कर रही है उस पेपर को। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप रब करिए ग्लास रॉड को, ओके, सिल्क के क्लॉथ से खूब रब करिए ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से, तो क्या होगा कि जब उस रॉड को आप ले जाएंगे किसी बलून के पास, इन्फ्लेमेटेड बलून, so what it is going to do, that rubbed rod is going to attract that balloon, then it means again फिर तो कोई चार्ज है, कुछ तो है, कोई तो बात है जिससे अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, कुछ है। सो ये वाली जो चीज थी ये किसमें दिखी? एटम में भी सेम चीज दिखी। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये जो चार्ज है वेयर डज इट कम फ्रॉम? अगर एटम में भी चार्ज था तो वो चार्ज आया कहां से? वेयर डज इट कम फ्रॉम? ओके, सो द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड by knowing that atom is indivisible. Okay, sorry, by knowing that an atom is divisible. Atom आपका divisible है। पहले तो indivisibility की बात की थी, डाल्टन ने भी किया, साइंटिस्टों ने भी किया, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, चार्ज आया, पता चला कि एटम्स में कोई चार्जेस होते हैं, तब वहां से सबसे पहले पता चला डिविजिबिलिटी के बारे में कि एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, एंड दीज एटम्स दे कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, और यहाँ पे जो डाल्टन की थ्योरी थी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड एटम can't be divided, that has been wrong. ओके, सो एटम्स को माना गया कि उनके पास चार्ज पार्टिकल्स नहीं है और एटम को we can divide. So many scientists contributed in relieving that there is a presence of charged particle in an atom. Okay, so it was known by 1900 तक it was known that atom is indivisible, but it contained at least one subatomic particle, the electron. ओके, सबसे पहले क्या पता चला हम लोग को 1900 के एंड तक कि एटम इंडिविजिबल है, बट उसके पास कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है
Okay, I will be telling you this also. He identified the presence of new radiation, okay, in a gas discharge. New radiation की बात उन्होंने की थी in a gas discharge. Okay, so क्या था वो new radiation in a gas discharge? उसको इन्होंने क्या नाम दिया? He called it as canal rays. क्या बोले उसको ये? E gold state में क्या बोला उसे? Canal rays. So these canal rays were considered to have positive charge. यहाँ पे positive charge की बात हुई और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि क्या था? नेगेटिव चार्ज था. तो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस थी which ultimately led to the discovery of subatomic particles. ठीक है? तो the subatomic particles had a charge equal in magnitude but opposite in size. But opposite in size. एक सब एटॉमिक पार्टिकल को नेगेटिव बताया गया, दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को पॉजिटिव बोला गया. ओके, सो द नेगेटिव वन वाज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इट वाज approximately 200 times as that of an electron. This one was 200 times as that of an electron. So it was given the name proton. So पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई 1886 में, E गोल्ड स्टेट. फिर जे थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोला गया कि दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम. अभी तक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल की बात किसी ने भी नहीं की थी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन दिया गया और प्रोटॉन को कौन सी? पॉजिटिव साइन दिया गया. ओके, E माइनस और P प्लस. ओके, सो द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज +1 एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल. वी आर टॉकिंग अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. 1 प्रोटॉन का मास जो है कि 1 यूनिट लिया गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का मास जो था वो कंसीडर किया गया क्या कि दैट इज नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1. चार्ज क्या था? -1. सो इट वाज सीन दैट एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, so these protons and electrons, since they have opposite charges, one is having negative charge and one is having positive charge, so they are mutually balancing their charge. ये दोनों mutual means they are एक दूसरे के साथ, they are balancing the charge. Okay, so it is also appeared that the protons were in the interior of the atoms. अब क्या कहा गया कि एटम है सपोज ये, तो अंदर की साइड इंटीरियर ऑफ द एटम किसको देखा गया? प्रोटॉन्स को. ओके, वेयर इज इलेक्ट्रॉन्स वर कंसीडर्ड कि वो बाहर रहते हैं एंड दे कैन बी रिमूव्ड इजीली. हमने पहले भी देखा है बहुत सारे अपने चैप्टर्स में, मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस होता है. ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं प्रोटॉन का गेन और लॉस होता है? दिस इज बिकॉज प्रोटॉन जो है इनर पार्ट ऑफ एटम में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है कि बाहर की साइड में हैं और दे आर जस्ट easily removed but not the protons. So this is the answer for that questions ki why electrons are gained and removed, why not protons. Okay, so now there is a big question that what sort of structure did these particles of atom form? अब ये electron और proton मिले, they were the sub particles of atom. तो अब ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे? What type of structure are they going to make? So we will see this
So next let's see the structure of atom. ठीक है? So we have already studied about Dalton's atomic theory. In the chapter 3rd, I have taught you about Dalton's atomic theory. That suggested that the atom क्या है? Smallest particle है. That is indivisible. आप atom को divide नहीं कर सकते हो और indestructible. आप उसको destroy भी नहीं कर सकते हो. ना तो आप उसको divide कर सकते हो, नहीं आप उसको destroy कर सकते हो. सब पार्टिकल्स आए एटम के, ओके, सब पार्टिकल्स कौन से आए? इलेक्ट्रॉन आया और प्रोटॉन आया. तो जब इनका इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का कि ये एटम्स के सब पार्टिकल्स हैं, दे आर इनसाइड द एटम, सो दिस थ्योरी ऑफ डाल्टन इट वाज फेल्यूर. ओके, डाल्टन्स थ्योरी फेल्ड एट दिस एस्पेक्ट. जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंटली पता चला तो डाल्टन की थ्योरी जो थी वो फेल हो गई. ओके, सो इट वाज देन कंसीडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड. अब हमको क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड द वे दे आर अरेंज्ड, उनका अरेंजमेंट क्या है. ओके, अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट क्या है एटम्स के अंदर. ओके, सो क्या हुआ कि ये एक्सप्लेन हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, दे गेव वेरियस एटॉमिक मॉडल्स. ओके, सो द फर्स्ट साइंटिस्ट हु केम वाज जे थॉमसन. ओके, सबसे पहले कौन आया? जे थॉमसन आए. ही प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए इन्होंने एक मॉडल दिया. ओके, सो लेट्स सी व्हाट डज द मॉडल ऑफ जे थॉमसन सेज. ओके, जे थॉमसन्स मॉडल. तो जे थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल of an atom. He said that it is similar to that of a Christmas plum pudding. अब Christmas plum pudding आपने देखा है? It is like कि ये है पुडिंग और इसमें ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं. ओके, so what did he considered? He considered it like a Christmas plum pudding. Okay, so now what we can think that there is a spherical shape is there. So this spherical shape, this is the positive charge. And these electrons in this sphere, which were the dry fruits basically. पुडिंग में क्या रहता है? वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं. सो ये जो ड्राई फ्रूट्स थे इनके इलेक्ट्रॉन्स, दे वर कंसीडर्ड एट द नेगेटिव चार्ज. ओके, ये जो ड्राई फ्रूट्स थे इनको इलेक्ट्रॉन माना गया और ये जो बाकी स्फीयर था उसको पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन माने. ऐसा एक और एग्जांपल आप ले सकते हो. इफ यू हैव सीन वाटरमेलन, इफ यू कट अ वाटरमेलन, हाउ डू इट अपीयर्स? जब वाटरमेलन को कट करोगे तो ये रेड कलर का पोर्शन आएगा और उसमें यहाँ पे ब्लैक ब्लैक शीट्स होती हैं ना, ऐसी शीट्स इलेक्ट्रॉन वाटरमेलन में. तो ये जो ब्लैक शीट्स हैं वो क्या है? ये ब्लैक शीट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए. इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in the atom.
जस्ट कंसीडर कि ये जो ब्लैक शीट्स हैं वाटरमेलन की वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड है और ये जो रेड पॉजिटिव स्फीयर बचा दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अ प्रोटॉन। सिमिलरली पुडिंग, क्रिसमस प्लम पुडिंग में भी वही है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस कि जे थॉमसन हिमसेल्फ कंसीडर्ड इट कि दीज आर एज electrons and the rest spheres are like positive charge. Okay, similarly for a watermelon, the positive charge in the atom is spread all over like a red edible part of the watermelon, while the electrons are the seeds that are present. Okay, so this he made his model on the basis of this. So the model of Thompson was also called as watermelon model of atom. Okay, J.J. Thompson के मॉडल को watermelon model of atom बोला गया और plum pudding model. Okay, it was also called as plum pudding model or watermelon model of atom. ठीक है, इन्होंने बताया कि atoms कैसे होते हैं. It's like a sphere. इस spheres में ऐसे electrons embedded होते हैं and this portion is a positively charged protons. J.J. Thompson was a Nobel Prize winner. Okay, so he was awarded Nobel Prize in Physics. इनको Nobel Prize किसमें मिला? Nobel Prize मिला इनको Physics में. In which year he was given the Nobel Prize? In 1906. 1906 में इनको Nobel Prize दिया गया on his work, and because I have already told you that he has discovered electron, so electron की discovery के लिए इन्हें Nobel Prize मिला था 1906 में. Okay, so this was about his model. Now we shall be seeing what were the postulates, what he has considered. Okay, let's see what is the Thompson's postulate. So Thomas gave two postulates. The first one was that atom consists of positively charged sphere. Okay, as you have seen the example of watermelon, that is the red portion of watermelon is assumed as the positively charged sphere, and the electrons, he told that the electrons are embedded in it. Okay, electrons उसमें embedded है, embedded in it. Okay, so this was his first postulate, that the atoms consist of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Secondly, he told that the positive and negative charge, किसका पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन का, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. क्या है? वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है. ओके, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सो अब वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू? दे विल कैंसल ईच अदर. ओके, so he told that atoms as a whole are neutral. They told that atoms as a whole are neutral, or you can say that they are electrically neutral in fact. Okay, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो both are equal in magnitude, so they are cancelling
not considered fully. So it was not taken fully. So it was rejected. And next came Rutherford. What did Rutherford did? Rutherford ने क्या किया? उन्होंने गोल्ड फॉइल ली और उसमें पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई. Okay, so let's see the Rutherford model. Okay, so Rutherford's model of atom. Okay, so there was a scientist Ernest Rutherford. He was interested in knowing about the electron arrangement. इनको किसमें इंटरेस्ट था? ये जानना चाहते थे कि atoms में electrons का arrangement कैसा है. Within atoms, how is the arrangement of electron? So what Rutherford did, he designed an experiment. In this experiment, what he did, he has considered a fast moving particle. Okay, एक fast moving particle को इन्होंने लिया. That is the alpha particle. Which particle? Alpha A particle. ठीक है, fast moving particle, alpha A particle को लिए ये. He took that and what he did, he just made it to fall on a sheet of a thin sheet, gold sheet, gold foil you can say. Fast moving particle, alpha particle he took and made it to fall. Fall on what? Fall on thin gold foil. किस पे इन्होंने fall कराया? Thin gold foil पे. अल्फा पार्टिकल को लिए, अल्फा पार्टिकल फास्ट मूविंग पार्टिकल है और उसको fall कराया. ये अगर thin foil sheet है गोल्ड की तो उस पे इस अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे fall कराया. Now the question is कि why did he choose this gold foil? So he has selected gold foil because he wanted a very thin layer. Okay, so thin layer इनको चाहिए थी, बहुत thin layer, as thin as possible. So this gold foil was about thousands atoms thick. Okay, और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स क्यों चूज किया? So he has chosen alpha particles because what is this alpha particle is a doubly charged helium. What is that? Doubly charged helium. अल्फा पार्टिकल्स क्या है? डबली चार्ज हीलियम है. तो 1 हीलियम का मास आपको पता है 2 म्यू होता है. तो अगर डबली चार्ज हीलियम होगा तो कितना हो जाएगा? 4 म्यू. कितना चार्ज हो जाएगा? 4 म्यू. सो तो अल्फा पार्टिकल्स था वो डबली चार्ज हीलियम आयंस था. तो उसका जो मास था, ये तो हीलियम का मास हो गया और अल्फा पार्टिकल्स का मास क्या हो गया? 4u. So it is a very fast moving particles and it was considered to have a great considerable amount of energy it is having. Okay, so now what he expected, this Rutherford, when he had made this alpha particles to fall on the gold sheet, what he was expecting? He was expecting that alpha particle would deflect. Alpha particles जो है कि क्या होगी? Deflect होगी. किससे? जो भी subatomic particles हैं atom के. ठीक है? So what he thought? He thought that the alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold foil. Gold atoms जो थे gold foil में, जो gold foil is क्या? Gold is a element. Gold क्या है? Element
ठीक है, ऐसा तो रदरफोर्ड ने सोचा था कि ऐसा होगा कि गोल्ड एटम्स जो है कि वो डिफ्लेक्ट करेंगे these alpha particles को, but हुआ क्या, since these alpha particles they were very heavier than the protons. These alpha particles were heavier than protons. ठीक है, ये बहुत हैवी थे, heavier than proton थे। तो हुआ क्या कि there was no expectation to see large diffraction, कोई डिफ्लेक्शन दिखा नहीं, और अल्फा पार्टिकल्स की क्या हुई, स्कैटरिंग हो गई, एंड द रिजल्ट वाज टोटली अपोजिट ऑफ व्हाट रदरफोर्ड हैज थॉट। रदरफोर्ड ने सोचा था कि अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल पे ऐसे गिराएंगे तो वो डिफ्लेक्ट बैक होंगे, दे आर गोइंग टू रीबाउंड, वापस आएंगे, बट द अल्फा पार्टिकल शोज स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हो गई, एंड दैट वाज टोटली एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, पूरा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था उनका। ओके, सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व व्हेन ही हैज fallen that that alpha particles from the gold foil? The first thing we saw was that most of the fast moving alpha particles, they pass straight, okay, straight through the gold foil, straight passing through the gold foil. Second thing क्या हमने देखा कि some of the alpha particles were deflected by the foil by same angle, कुछ तो straight pass हुई, कुछ deflect हुई किसी एंगल से, ओके। और अगर कोई estimation what he gave that कि out of every 12,000 particles, okay, one out of 12,000 particles appear to rebound. रीबॉन्डिंग किसकी हुई, रीबॉन्डिंग मींस जो ये चाहते थे रिफ्लेक्ट बैक होंगे, दे विल बाउंस बैक, वन आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स, केवल एक पार्टिकल, 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स जो है कि रीबाउंड हुए। दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट बिकॉज ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट। ओके, सो इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड वी कैन से दैट this result was almost as incredible as if you fire 15-inch cell at a piece of a tissue paper and it comes back and hit you, वो वापस आपको ही आगे और hit कर दे। So it was like that. So his model Rutherford's model was not according to his expectation what he has thought. He has thought that all the alpha particles are going to reflect back. They are going to rebound. But one out of the 2,000 particles rebounded. Some deviated at some angles and most of them went to straight. So this Rutherford, his year was 1871 to, if we see his life history, 1937. Okay, he was known as the father of nuclear physics. He was called as the father of nuclear physics. Okay, he was the father of nuclear physics. So he is famous. Why was he famous? He was famous for the work of radioactivity and the discovery of nucleus of atom. What he did? He has discovered nucleus of atom. Rutherford was the one who discovered nucleus of atom. Radioactivity के लिए भी ये famous थे। और इनका ये जो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट था उसकी हेल्प से इन्होंने न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में बात की थी, इसलिए इनको भी नोबेल प्राइज मिला। ओके, he got Nobel Prize in chemistry in
इनको नोबेल प्राइज किसमें मिला? केमिस्ट्री में. And we have studied about him that he has got in physics. Okay, so he got in chemistry, Thompson got in physics. Both of them were Nobel Prize winner. Okay, so he got in 1908. Okay, so this was about the Rutherford model. Now if you think about an activity like suppose there is an open field, okay, and you ask somebody to close your eyes and throw a stone on the wall in front of him. So when he will be throwing those stones, if 10 times 10 stone you give and 10 times he is going to throw, 10 times there will be a sound. When the stone is going to hit a wall, there will be a sound that person can hear. But if you ask the same person to throw the stone, not this time at the wall but at the barbed wire fence, जहाँ पे फेंसिंग होती है वहाँ पे आप बोलो उनको कि थ्रो करें, तो क्या होगा कि उस टाइम पे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टोन will not hit the fence. अब फेंसिंग तो ऐसे हुई है, स्टोन्स क्या होंगे, कुछ स्टोन्स तो बीच में से पास हो जाएंगे. जरूरी नहीं है कि हर बार जहाँ पे फेंसिंग ऐसे हुई है, सपोज दिस आर द फेंस और स्टोन आया, तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार इस फेंस पे ही हिट करे. इट कैन गो इन बिटवीन, बीच में से भी वो निकल सकता. ओके, so what is going to happen? It is not going to hit the fence. और जब fence पे नहीं hit करेगा तो no sound will be produced. Okay, no sound will be heard by that person. So this is because why this is happening? Because there is a large gap between the fences. There is a large gap between the fences. और जब हम wall पे hit करते हैं तो ये wall है, कहीं भी लगे there is no gap. So you are going to listen the sound. रदरफोर्ड ने भी सेम रीजनिंग को फॉलो किया. उन्होंने भी इसी रीजनिंग के साथ अपना कॉन्सेप्ट दिया और ही कंक्लूडेड. लेट्स सी व्हाट ही कंक्लूडेड. ओके, डिड यू गॉट दैट व्हिच आई हैव टॉट यू स्टूडेंट्स, कि अगर आप वॉल पे हिट करते हो स्टोन को तो वॉल तो पूरी फ्लैट है, इट विल श्योरली हिट. बट अगर ऐसे फ्रिंजेस पे आप थ्रो करेंगे स्टोन को तो क्या होगा, स्टोन्स जो है बीच के गैप से भी निकल जाएंगे. देयर इज अ लार्ज गैप. जरूरी नहीं कि हर बार इस फेंच पे ही गिरे. सो यही चीज सेम इनके साथ हुई, रदरफोर्ड के मॉडल के भी साथ हुई. जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया गोल्ड फॉयल पे तो यही सेम चीज हुई. ओके, सो इन हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है, इनको भी सेम चीज फील हुआ अपने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग में. इन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम्स इज एम्प्टी. क्या होता है, एटम्स के अंदर जो स्पेस होती है इट इज एम्प्टी. सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. अब ये क्या है, दिस इज अ, सपोज दिस इज अ एटम ऑफ गोल्ड फॉयल. ठीक है, यहां से इन्होंने अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया. तो वैसे तो यहां पे हिट होता और वापस आना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं हुआ, ये ऐसे निकल गया. अल्फा पार्टिकल्स एटम्स के बीच में निकल गए. तो क्यों निकल गए, बिकॉज एटम्स में पूरा एम्प्टी था, बहुत सारे गैप्स थे, बहुत सारे स्पेसेस थे, इसलिए वापस रिफ्लेक्ट बैक होने की जगह अल्फा पार्टिकल्स हैव मूव्ड. ओके, अल्फा पार्टिकल्स हैव पास्ड थ्रू द एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड बैक. ये डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. ओके, फिर सेकंड चीज क्या हुई कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय देयर पाथ.
नहीं हुए और ये रहा। सो जो भी इनका एक्सपेरिमेंट रहा, जो कुछ भी हुआ उनके डेटा के अकॉर्डिंग, द डेटा फ्रॉम द डेटा, he was able to calculate the radius of nucleus. What he did? He has calculated radius of nucleus. ओके, न्यूक्लियस के रेडियस को इन्होंने कैलकुलेट किया, जिसको कि उन्होंने बताया 105 टाइम्स, 105 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम, लेस है 105 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। अब आप सोच सकते हो कि कितना कम रेडियस होगा उसका। ओके, सो रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे इन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। वी शैल बी सीइंग दैट राइट नाउ। ओके, so let's see what does this Rutherford's nuclear model of atom says. Okay, so according to this experiment, on the basis of this experiment, Rutherford put forward the nuclear model of atom, and it has some features, silent features. So the first thing he told that was that in an atom there is a positively charged center. ओके, कोई एटम है उसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम में। सपोज दिस इज एटम, तो यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। ओके, जिसको कि उन्होंने क्या कहा, उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जो था एटम का, उसको इन्होंने क्या कहा, nucleus. That was called as nucleus. So there is a positively charged center in an atom which was called as nucleus. So nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Okay? So all the mass of an atom resides in the nucleus. Okay, so this was the first thing which he told. Now the second thing what he has inferred was that these electrons they revolve around the nucleus in a circular path. अगर ये nucleus है सेंटर में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होगा और इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, in a circular path. ओके, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन के किनारे रिवॉल्व करता है. और थर्ड चीज उन्होंने ये बताई कि जो साइज है न्यूक्लियस की, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम. एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है छोटा सा, तो जो साइज है न्यूक्लियस की, द साइज ऑफ nucleus is very small as compared with the size of an atom. Okay, so he has given 3 postulates on his observation. This was the nuclear model of an atom. He has also got Nobel Prize for telling about nucleus. So the first thing he told that the positively charged center
in the nucleus. The second thing he told that electrons revolve around the nucleus in a circular path. And the third thing he told that the size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. Nucleus बहुत ही छोटा है अगर हम उसको कंपेयर करें किसके साइज से, एटम के साइज से। ये सब कुछ उन्होंने दिया, इनको नोबेल प्राइज भी मिली। It was given as the nuclear model of Rutherford, but still there were some drawbacks in his model. So now we shall see what were the drawbacks. Okay, so the drawbacks of Rutherford nuclear model. Okay, what we need to see? We need to see the drawbacks of Rutherford model of an nuclear model of an atom. So the revolution of electron in a circular orbit is not expected to be stable. फर्स्ट चीज क्या उन्होंने बोला कि जो रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी, इन्होंने बताया कि रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। ये जो रिवॉल्यूशन की बात इन्होंने की थी दैट वाज नॉट स्टेबल, okay, is not expected to be stable, is not expected to be stable, okay. So the second thing was that during acceleration charged particle would radiate energy. जब एक्सेलरेट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, दे आर गोइंग टू रेडिएट एनर्जी, दे आर गोइंग टू गिव सम एनर्जीज. सो thus the revolving electron would lose energy. Electron is also a charged particle, it is negatively charged. तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो it will lose some energy, lose करेगा एनर्जी, okay, it is going to lose some energy and finally fall into the nucleus. और एक टाइम ऐसा आएगा कि it will lose all its energy and it is going to fall in the nucleus, okay. If this were so, the atom should be highly unstable. अगर ऐसा वाकई में हो रहा है तो atoms क्या है, they are highly unstable and hence matter would not exist. If atoms are highly unstable, how could matter exist? Matter could not exist. It is because these atoms they are stable, that's why matter exists. Matter exists in the form we know, okay. So we know that atom is quite stable. We know that atom is quite stable. लेकिन इनकी जो थ्योरी इन्होंने बताई, इस थ्योरी से तो फिर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था और ये सब रिवॉल्यूशन वाली बात इन्होंने की, इसके हिसाब से तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है. वी ऑल नो दैट एटम इज अनस्टेबल. सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, ओके. सो रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट around the nucleus was not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration, okay. ये circular पार्ट में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. और अगर एक्सेलरेशन होगा तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है. एनर्जी का रेडिएशन होगा और जब एनर्जी का रेडिएशन होगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब ये अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे फॉल
This was the drawback of his nuclear model theory. So just to correct him, another scientist came and his name was Bohr. Okay, Neil Bohr, he came. Let's see what did he say. He gave his model atom. So now we will study about Bohr's model of atom. Bohr's model of an atom. Okay? So देखते हैं बोर्स ने क्या कहा. इन्होंने रदरफोर्ड के आउटकम को रिमूव किया. So in order to remove the objections raised against Rutherford model, his full name was Neil Bohr. Okay? Niels Bohr. But he was famously known as the Bohr's model of atom. So what did Niels Bohr put forward? He gave some of his postulates. Okay? So he said that only certain special orbit known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom. Atom के अंदर क्या होगा? कोई certain orbits हैं जिनको कि discrete orbits बोलते हैं, that will be allowed inside the atom. ठीक है? और दूसरी बात इन्होंने कही कि while revolving, जब ये electrons revolve करेंगे in the discrete orbit, the electrons do not radiate energy. Okay? So the first thing he told was that only certain special orbits known as discrete orbit are allowed inside the atom. And the second thing was that while revolving in discrete orbit, these electrons, they do not radiate energy. तो अगर energy radiate नहीं करेंगे, so they are not going to lose the energy. There will be no loss of energy, so they are not going to fall on the atom, nucleus. Sorry. Okay? So ये दो postulates देके इन्होंने जो है कि एक नई थ्योरी बनाई, जिसमें इन्होंने for the first time there was he talked about orbits. For the first time orbits और cells की बात की गई. तो ये जो orbits और cells हैं, they are basically what? They are energy levels. Okay? They are energy levels. ठीक है? अब let's see. Suppose this is a nucleus. Okay? And these are some of the orbits. ठीक है? ये कुछ orbits हैं. ये आपका न्यूक्लियस है. ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है. ओके? So energy level are fixed distance from the nucleus of an atom. जो energy level है, तो nucleus से उसकी एक fixed distance होगी atom में. Where electrons may be found. जहाँ पे electrons मिल सकते हैं, और these electrons are tiny negatively charged. We know that particles of atom बहुत ही छोटे होते हैं electrons, और they are negatively charged. That they move around the positive nucleus at the center. ओके? और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उनके अराउंड मूव करते हैं. अब बात करेंगे एनर्जी लेवल्स की. तो व्हाट डिड ही से? एनर्जी लेवल्स आर जस्ट लाइक द स्फीयर्स. ओके? इफ यू सी these stairs, this is the top one. 1 2 3 and 4. This is the top and this is the
ग्राउंड 1 सबसे ज्यादा ग्राउंड से अटैच्ड स्टेयर है ये। ओके, ऐसे ही इन्होंने बताया कि ऑर्बिट्स या सेल्स हैं, ये बिल्कुल स्टेयर्स की तरह होते हैं, जिनको इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, के एल एम एन सेल। सो न्यूक्लियस से जो फर्स्ट सेल थी उसको इन्होंने he said it as a K cell. Okay, then came after K L cell. Okay, then the third one is the M cell, and this one was the N cell. So this is few of the cells I am showing you here. अब K L M N cells का क्या मतलब है? ओके, K सेल में डिफरेंट N की डिफरेंट वैल्यूज होंगी 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये स्टेयर्स हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। ओके, सो ऐसे जो आपकी K सेल N सेल है, इनमें डिफरेंट वैल्यूज हैं। K में N की वैल्यू 1 है, L में N is going to be 2, ओके, M में N is going to be 3, in the N cell N is going to be 4. So it will go on like this. Okay, so he was the first man to talk about the energy level in an atom. Nucleus is there are orbits, or you can say cells, और इसी सेल्स की इन्होंने बात की, डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल है। जो न्यूक्लियस के पास वाली सेल होगी वो सबसे ज्यादा बाउंडेड होगी, उसके बाद नेक्स्ट सेल बाउंड होगी, उसके बाद ये सेल बाउंड होगी, और जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी द मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बिल्कुल अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर फ्री टू मूव। बट जो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस जो कि न्यूक्लियस के पास होंगे, दे आर स्टेबल। व्हाई? न्यूक्लियस इज हैविंग द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो देयर विल बी अ अट्रैक्शन बिटवीन दीज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ओके, because this nucleus is a positive charge, electron is a negative charge, we all know that opposite charges attract each other. तो ये जो सेल है, जो न्यूक्लियस के पास की जितनी पास सेल रहेगी उतना वो उसको टाइटली होल्ड करेगा न्यूक्लियस, और जो आउटर सेल रहेगी जिसमें काफी डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो सब उसके इलेक्ट्रॉन सबसे अनस्टेबल होंगे, दे आर फ्री टू जस्ट move. Further in this chapter only we will be studying about all these in detail. अभी तो बस हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि experiments different scientists have done and what they have postulated. Further we will be studying about whole everything, how do we find these electrons, number of electrons, number of cells and all this. Okay? So here till here we got to know that all the scientists believe that atoms have got some subparticles, that is electron and protons only, and they have talked about electron, Thomas
So he got the Nobel Prize on the work he did on the structure of atom. Okay? Structure of atom में इनको Nobel Prize मिला in which year? In 1922. 1922 में he got a Nobel Prize for the structure of atom. Okay? So what happened? He Bohr was a very good professor. Okay? Or he has many good writings also. Numerous writing he have done. Some of the famous one I will be telling you. The theory okay, the theory of spectra, and atomic constitution. The theory of spectra and atomic constitution. Then he gave the atomic theory. This was also very famous. The atomic theory. And one more famous book was of the description of nature. Okay? The description of nature. Okay? So this was some of the foundings of Bohr. So we have discussed a lot about electron, proton. We have seen how different scientists have told us about electron and proton. But there was one more subparticle of an atom in 1932. A scientist named J. Chadwick. Okay? He came up with the discovery of another subatomic particle, and that was called as neutrons. Okay? In 1932, J. Chadwick came up with one more subatomic particles that was called as neutrons. What did he say about neutrons? He said that neutrons had no charge. Okay? And the mass is nearly equal to that of proton. Neutron के पास चार्ज कोई नहीं होता और इनके जो मास होते हैं वो नियरली इक्वल होते हैं किसके? प्रोटॉन के. And neutrons are present in the nucleus of all atoms. These neutrons are present in the nucleus of all atoms except for hydrogen. बस हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते, otherwise they are present in all the atoms and they are represented by N. इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट किया गया था, प्रोटॉन को P से, और न्यूट्रॉन are neutral, they have no charge, they are represented by N. Okay? So the mass of atom is therefore given by the sum of the mass of protons and neutrons present in the nucleus. Okay? So this is the important thing, that if you are asked about the mass of an atom, so it will be equal to the sum of masses of proton plus sum of masses of neutron present in an atom. P plus N is going to give you mass of an atom. So this was all for today. Here I complete my part 1 of the structure of the atom. Okay students, hope you have learned so many things. I will be taking the second part also, in which we will go in deep about the atoms, atomic mass, structure and everything about the cells and all. Okay? So this was all for today. Thank you so much for watching my video. If you like it, please give a like button. And if you have not subscribed our channel, always follow it right now. Please do subscribe it so that you can get the daily updates of the videos which we upload. Okay? And you can also go in Google Play. Just download our app. It's with the name CSCS e-learning. Just go through it. Enjoy the videos are there. Interesting videos are there. Good notes are there. PDF notes are available. MCQ questions are there. Just go through it. Thank you so much.